ओके तो बच्चों our next topic is defect of vision, right? Defects of vision. So let us see what is this defects of vision. Right? So let us first understand what does it mean actually when to say one eye is defective, right? So see, first of all let us understand this is your eye. This is your eye. This is the eye. Now before this eye, at a 25 centimeter, this is your NP. NP means near point. Near point, right? Yani in front of your eye at a 25 centimeter exactly, we consider a point that is near point. Remember, it is very very important. I am telling you. Okay, we are going to discuss very important topic in order to understand. Most of the students, they are unable to understand what is myopia and how to solve the problem related to myopia and hypermetropia. This is the main thing. First of all, they should understand what exactly near point is and what exactly the far point is. See, at furthest point, okay na, from person's eye, one point we suppose, and that point is far point. Okay. Now for a healthy eye, for a normal eye, we consider near point at 25 centimeter and we consider far point at infinity, right now. And this is the range. This is the range. Range means here from near point to far point. This is range of vision. Range of vision. So what is our range of vision, bacho? 25 centimeter to infinity. 25 centimeter to infinity. This is our range of vision. Now what is this NP? Near point क्या है बच्चों? ये this is that point from a person's eye where an object can be placed so that its sharp image can be formed on retina without any problem. यानी बिना कोई प्रॉब्लम का नियर पॉइंट जो है वो ऐसा पॉइंट है आंख के ठीक सामने जहां पर हमें किसी भी वस्तु को हम रख सकें और जिसकी इमेज जो है ना हमें रेटिना पर आराम से बन सके, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो दैट इज आवर नियर पॉइंट. एंड फॉर एन हेल्दी आई, फॉर ए नॉर्मल आई, फॉर ए हेल्दी आई, नियर पॉइंट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर. सो दिस 25 सेंटीमीटर इज ऑल्सो नोन एज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ distinct vision. ठीक है ना. This 25 सेंटीमीटर इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी. जो न्यूनतम दूरी है मतलब वो जो सबसे नज़दीक की पॉइंट जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख सकें उसकी इमेज रेटिना पर बन सके. So that is 25 centimeter. For a normal eye, for a healthy eye, 25 centimeter is your least distance of distinct vision. Clear? Now let us go for far point. So what is this far point? Far point is that furthest point from a person's eye where an object can be placed so that its sharp image can be formed on retina. मतलब ये near to far, near वो point है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, वो मिनिमम पॉइंट है, वो लिस्ट डिस्टेंस है जहां पर ऑब्जेक्ट को हम रख सकते हैं जिसकी इमेज रेटिना पर बन सके. एट द सेम टाइम फार पॉइंट ऑल्सो वो सबसे दूर का पॉइंट है फॉर ए नॉर्मल बॉय, फॉर ए नॉर्मल बॉडी, फॉर ए नॉर्मल पर्सन, फॉर ए नॉर्मल आई, फॉर ए हेल्दी आई, है ना. वो सबसे दूर का पॉइंट है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकें जिसकी इमेज क्लियरली इमेज रेटिना पर बन सके. यानी फार पॉइंट इज दैट फर्थेस्ट पॉइंट वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड सो दैट इट्स शार्प इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन रेटिना. सो फ्रॉम नियर पॉइंट टू फार पॉइंट, this is our complete range of vision. A person, a normal person, a healthy person, है ना, a person with a healthy eye can only see the object placed in between this much area. I mean near point to far point. अब कुछ बोलेंगे कि सर हम इतना से भी देख सकते हैं, सर हम यहाँ से भी, सर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से भी देख पाते हैं. अबे वो वहाँ पे हम आँखों में ना स्ट्रेन पड़ रही है, ठीक है. सो एक्सपेरिमेंटली द पर्सन इज एबल टू सी नॉर्मली, okay, without any strain or stress when the object is placed exactly at 25 centimeters. So suppose someone will ask you, sir, I am unable to read the newspaper placed at 15 to 20 centimeter in front of eye. Tell me which kind of defect of vision I am suffering from. तो भैया आप बहुत ही नॉर्मल हैं, ठीक है. You are not at all suffering from any kind of defect of vision. Clear? You are a very good eye. भगवान के दया से आपके पास आपका बहुत अच्छा आँख है. चलिए. सो पर्सन
है ना, दे स्टार्ट सीइंग फ्रॉम 25 ओनली एंड अप टू हाउ लॉन्ग यू कैन सी, तो अप इन्फिनिटी। तो अब बच्चे क्या करते हैं, सर हम तो आकाश पताल मतलब तारा दिखाई दे रहा है सर, है ना, करोड़ों किलोमीटर दूर है वो, सन दिखाई दे रहा है सर, है ना, लाखों करोड़ किलोमीटर दूर है वो दिखाई दे रहा है। अबे वो इनफाइनाइट डिस्टेंस, ओके, हाउ फार और हाउ लॉन्ग अ पर्सन कैन सी, सो दैट इज योर आंसर, इनफाइनाइट डिस्टेंस। आई मीन इफ यू कंपेयर, ठीक है, वेयर वन पर्सन कैन सी, यू ऑल्सो कैन सी अप टू दैट मच डिस्टेंस, third person can see up to that much distance, so that much distance which is common for all, okay, that is the farthest point, that is infinity. Infinity might be यानी 25 के बाहर जो भी distances है, you understand ना what I mean, ठीक है। so this near point and far point you should remember. Now listen, the point is that for defective eye, either this near point shifts and from 25 centimeter or this far point shift from infinity. So if the near point shift from 25, this is the case become hypermetropia, and when the far point shift from infinity, this is the case become myopia. So let us discuss myopia and hypermetropia further in detail. Come on. Okay. तो बच्चों, फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ विजन इज मायोपिया. सो व्हाट इज मायोपिया? सी, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, राइट. सो व्हाट इज दिस मायोपिया? अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया जो है ना, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट दे आर अनेबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट. Person can see nearby object but unable to see distant object clearly. यानी दूर की चीज भी उसको दिखाई देंगी बट थोड़ा ब्लर, अस्पष्ट नहीं. तो व्हाट इज दिस मायोपिया? I mean, a person is said to be suffering from myopia if he or she can see nearby object clearly but unable to see far off object clearly. ठीक है, मतलब नज़दीक की चीज़ आपको दिखाई देंगी. नियर साइटेडनेस मतलब निकट की दृष्टि दोष, नज़दीक का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा. अंडरस्टूड ना? दूर का नहीं दिख रहा है मतलब व्हाट इज द रीजन? यस, फार पॉइंट जो है ना, शिफ्ट फ्रॉम इन्फिनिटी. तो इनकी जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट वो हो गया, शिफ्ट हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी. मतलब उसकी जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से शिफ्ट हो गया. रहना चाहिए उसको इन्फिनिटी में, लेकिन अब आ गया वो इन्फिनिटी से थोड़ा पहले. मतलब यू माइट हैव सीन क्वेश्चन लाइक फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई 150 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर, सो फाइंड आउट द पावर. ठीक है, सो लाइक दैट दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट डज मायोपिया मीन. तो in this kind of question, see, you are getting high marks. Either they will ask for 5 marks, complete 5 marks, long question. They are asking myopia in long question only. In some time they are asking 3 marks also, right? So for that, if this question you are getting for long question, in a long question type question you are getting this question, so you try to mention here about. So firstly we are discussing about, we are telling what about myopia. So this is what you can write. A person suffering from myopia can see nearby object clearly but unable to see far off object clearly. ठीक है, what happened in this? तो far point जो है shift from infinity. Now what is the cause of this myopia? ठीक है ना. So दो रीजन हमको लिखनी है यहाँ पर. तो देखो, इसकी जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से शिफ्ट हो गई. मतलब व्हाट हैपेंड? फोकल लेंथ डिक्रीजेज, फोकल लेंथ डिक्रीजेज. ठीक है, अब ये फोकल लेंथ डिक्रीज क्यों किया? तो भाई ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ आई लेंस. अब ये इलोंगेशन क्या है भाई? तो ये एक्सेसिव कर्वेचर का नतीजा है. ये इलोंगेशन, जब कर्वेचर आपका जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा ना, तो फोकल लेंथ जो है ना डिक्रीज कर गया. क्यों भाई फोकल लेंथ डिक्रीज किया? क्योंकि लेंस बिकम थिक. ऑलराइट, सो फोकल लेंथ डिक्रीजेज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर और व्हाट यू कॉल इलोंगेशन ऑफ आई लेंस. तो ये इसकी जो रिलेटेड डायग्राम है, दैट वी शैल डिस्कस. डायग्राम
So what is the related diagram? So firstly we will go with this. So three diagrams are there. Okay, diagram जो है ना, diagram let us draw here. Okay, let us draw the diagram here. One diagram, two diagram, three diagram. See, try to draw at least three diagram, right? And this is I am showing for normal eye. ठीक है. So normal eye, light ray coming from far off object, means from distant object exactly meeting at retina, so we are able to see the object clearly. Clear? So this is exactly meeting at retina. So light ray coming from distant object, after refraction through this lens, it is meeting exactly at retina. So now the person can see clearly. The person has no problem. This is a normal eye. Clear? Now for defective eye, how it works? Listen. This is the defective eye. I mean myopic eye. How light is coming? Light is coming from infinity, but after refraction, it is not meeting at retina. In fact, it is meeting before the retina. You see. So why it is meeting before the retina? Because it has less focal length now. Its focal length decreases. So what we will have to do here? We will apply here. We will use a spectacle. चश्मा लगाएंगे हम यहाँ. कौन सी चश्मा लगाएंगे भाई? कनकेव लेंस. तो ये कनकेव लेंस जो है ना, ये डाइवर्ज कर देता है, तो थोड़ा ये लाइट को उठा देगा. अब जहाँ ये लाइट पहले यहाँ पे बन रहा था, है ना, इट विल फॉर्म नाउ हियर. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ इट वर्क. ओके, सो दिस इज योर करेक्शन by using concave lens. तो जब after diagram when you will write for correction, तो you will write for remedial purpose we are using concave lens. तो this defect is corrected by, है ना, by using concave lens of suitable power. And how to calculate the power? ठीक है, how much exactly the power will be? So that I am calculating. Listen here, that power will be P is equal to 1 by F, as you know. So that is equal to V 1 by V minus 1 by U. Now this V is image distance, means this is what which is visible. So that for image distance you will write 1 upon the far point which is already visible to him, ठीक है ना, to the person, and this object distance where it is to be seen, जिनको देखनी है. So that I want to see the infinite object. So of course here also minus use sign convention. So this 1 by infinity it will become 0. So mostly the formula will become P is equal to 1 by F is equal to 1 upon far point, where far point will be given in the question, right? So this is your formula for power of how to find out power for myopic eye. ठीक है? So this is how you will find out the power of suitable power of concave lens required for myopia. P is equal to 1 by F is equal to 1 upon far point. Don't forget to put up one minus sign here, because for convex lens, है ना, here जो है no matter it is concave or convex you are putting here, but the object is to be placed here ना, so that's why here everything will be minus. As you know, light ray coming in the direction of light ray taken to be positive, but this way, I mean opposite to the direction of propagation of light taken to be negative. And by the way we are considering all the distances from left side, ठीक है ना. So this is how P is equal to 1 by F is equal to minus of 1 FP. So this is about myopia. So firstly we have discussed myopia. What about myopia, है ना? And for your kind information, myopia happens because far point shift from infinity. Otherwise the eye was okay. आँख तो अच्छा ही था, उसकी जो फार पॉइंट थी वो इन्फिनिटी से घट करके थोड़ा पहले आ गया.
तो अब हम चाहते हैं कि मेरी फार पॉइंट जो है इन्फिनिटी हो जाए फिर से, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, चश्मा यूज़ करेंगे। कौन सी चश्मा, कनकेव लेंस की चश्मा। कितना पावर होना चाहिए भाई, तो इतना पावर होना चाहिए, ठीक है। अब ये फोकल, अब ये जो फार पॉइंट है, इफ इट इज गिवन इन सेंटीमीटर, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100 in order to get the answer power in diopter. If it is given in meter, then fine, you will get the answer power in diopter only. So this is how we will deal with myopia. Okay, now for more clarity, let's have some numerical on myopia. Okay, see, a person can see for correction अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। अ पर्सन कैन सी अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर ओनली, सो यू नीड टू टेल द काइंड ऑफ लेंस रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू फॉर करेक्शन पर्पस, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द फोकल लेंथ। सो हाउ यू विल अप्रोच, सी अप टू a person can see up to a distance of 1.5 meter, that means given that, है ना, given that focal, I mean far point, what is this far point given? Far point is 1.5 meter, that must and should be in minus, of course negative side, I mean opposite side means in minus. Far point is given, so then what you know, है ना, P is equal to 1 by F is equal to 1 by far point minus 1 by infinity. Here also we are giving minus sign, here also we are giving minus sign, but since here only here we have given already, so I will not put here minus sign here, ठीक है, minus infinity, ठीक। अब see, this one will become 1 upon infinity means 0, this one will become 0, and now P is equals to 1 by F is equals to, ठीक है ना, 1 by FP means minus of 1.5. Remember this is in minus, this is in meter, so no need to make it more and more जो है complex. You just see here focal length जो है this way, focal length is equal to minus of 1.5 meter, ठीक है, taking reciprocal both the side, तो F is equal to minus of 1.5 meter. Now if they will ask the nature of, see, minus means which lens, you only tell. Focal length is in minus, that means what, concave lens, so the nature of lens is concave lens, clear? So this is how you can approach. तो चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। a myopic eye can see required, so I'm not writing in detail, just you understand the nature of question, ठीक है। So the question is a myopic eye can see up to a distance of 80 centimeter, means what, and this is the case of myopia means far point. So here you will write, given that far point is minus of 80 centimeter, clear? This is question number 2 and this is the solution. So this is how you can approach. Far point is given by minus 80 centimeter, then use the formula P is equal to 1 upon F is equal to V minus 1 by U. Now as we have discussed, 1 by V मतलब 1 by far point, 1 by U means 1 by infinity. See, this is the case of 0, and here 1 by far point, that means I will put up here 1 by minus of 80. Remember this is in centimeter, and in the question they are asking only the focal length, I mean this. So for that what I will go for, either you can find out in centimeter only, or you can go for a meter also, ठीक है, but here in the question they are asking only the focal length, so better you go with centimeter only. So if 1 by F is equal to minus of 1 upon 80, the focal length is equal to what, minus 80 centimeter, yes or no? But you remember, if they will ask focal length also, then what you will do with, ठीक है। So here focal if they will ask you the power also, so for that I will go with power is equal to 1 upon F is equal to 1 by minus of 80, and that is to be multiplied by 100. So here 0 0 cancel out, so 2 से 4 time, 2 से 5 time,
तो हियर 1 पॉइंट माइनस ऑफ 1.4125 डायोप्टर, ठीक है, 1.45 1.25 डायोप्टर. सो दिस इज द पावर. तो हियर पावर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.25 डायोप्टर, ठीक है. तो ये नेक्स्ट चलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है. अब ये हाइपरमेट्रोपिया क्या है भाई? हाइपरमेट्रोपिया, दिस हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है, या फिर लॉन्ग साइटेडनेस. So this far sightedness या long sightedness या this hypermetropia, all three are same. So what happened in this? What about hypermetropia? Tell. Person can see nearby object but unable to see far off object in case of myopia. Here just opposite. Hypermetropia means far, मतलब दूर की चीज आपको दिखाई देगी, नजदीक की चीज नहीं. I mean not visible clearly. ठीक है. So you will write a person suffering from hypermetropia can see far off object या फिर distant object, you write better. So a person can see distant object clearly but unable to see nearby object clearly. Okay ना. And what happened in this? So इसकी जो near point है ना, near point that shifts from 25 centimeter. See, for a normal eye we have seen the least distance of distinct vision, that is the least point where an object can be placed so that its a sharp image can be formed on retina, that is 25 centimeter. I mean the near point for a person's eye is 25 centimeter. Okay, but here in this case in hypermetropic eye, what happened? Near point is 25 centimeter. It might be up to 30, 35, 40, 45. Okay, but it shifts from 25 centimeter. मतलब नाव जो है, अब हम ऑब्जेक्ट अगर 25 पे रखेंगे तो वो नहीं दिखाई देगा क्लियरली. 25 के बाद हाँ मे बी उनकी आँख की जो एनपी होगी नियर पॉइंट वो 35 होंगी, 40 होंगी, तो 40 पे उसको दिखाई देगा बट 25 पे नहीं दिखाई देगा. बट आई वांट टू सी एट 25. फॉर दैट व्हाट वी डू, सो लेट अस सी. सी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट अबाउट वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट है कॉज. सो व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ दिस हाइपरमेट्रोपिया? सो सी, एज वी से दैट नियर पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम 25. दैट मीन्स व्हाट? Focal length increases. Focal length increases, and due to shortening of size of eye lens, you can say that. Clear? I mean, see, in myopia what happened? Focal length decreases due to excess curvature, due to elongation. Here excess curvature means there जो है size of eyeball जो है increases. Here this is the case of decreases, so that focal length will increase. So एक decrease करेगा तो दूसरा increase करेगा. Understood ना? Okay. So cause we have discussed, about section we have discussed. Now what is the related diagram for this defect of vision? So see, again we will draw three diagram. One diagram for normal eye, second diagram for second diagram for defective eye, I mean hypermetropic eye, So see what happened, suppose this is the near point. So from here, this is at 25 centimeter of course. From here light ray coming, this is how it is not coming parallel. Remember,
it is coming, this is how the light is coming from near point, I mean from 25 centimeter, 25 centimeter. And since it is the normal eye, this is the healthy eye, so light ray coming from near point 25 centimeter after refraction exactly meet at retina. So it meets at retina exactly where an image will be formed. But here in case of hypermetropic eye, what happened, suppose this is the near point, after refraction it is not exactly meeting at retina, in fact it is meeting at the back side of retina somewhere. It is meeting at the back side of retina somewhere, but I am trying it would meet at retina exactly. So for that, what we are going to do? So for that let us see the third diagram I am showing here, the third diagram. See, this is the near point, light ray was coming, this is how initially it was meeting outside the retina, right? But as and when I will place one convex lens of suitable power, it will little bend this light, and now because of this bending it is meeting exactly at retina, and hence we see the object. Okay, see, initially for this myopic eye, hypermetropic eye, the near point shifts from this end to this end dash, so that when light ray was coming from end dash, it was meeting exactly at retina, and then the object was visible in previous case. I mean previously this end dash object was visible, but now because of placing this convex lens of suitable power, this n, I mean object placed at this n also will start visible. Understood? So this is what the case of hypermetropic eye with correction. So this is the correction, and this is hypermetropic eye, and this is the for normal eye. So correction, for correction what we are using? We use convex lens. So for correction purpose, which lens we are using? We are using convex lens, right? We are using convex lens. Now here only, if I would ask how to find out the power of this hypermetropic eye, so for that I need to rub some of the place here. I am rubbing here only. See, so in order to correct this hypermetropic eye, we need a convex lens, right? And how to find out the power of this convex lens? So as you know, power is equal to 1 by f, and I is equal to 1 by v minus 1 by u. This is the case of lens, of course. So this 1 by v means, this v means image distance, which is visible to you. So what is visible to you? The far point, I mean sorry, the NP, the near point, and for your eye, I mean for hypermetropic eye, this near point is already visible. But what is to be seen? क्या देखनी है? तो हमको देखनी है भाई 25 सेंटीमीटर देखनी है, ठीक है ना? This 25 सेंटीमीटर I want to see, but this NP is already visible to me. What I want to see? This 25 centimeter. So for that, what is the power? So this is the power. So P is equal to 1 upon F is equal to 1 by V minus 1 by U. So the main formula will become P is equal to, of course, 1 by F. In case of, if they, most of the cases they are asking focal length also. That's why I am placing F also, focal length also. So P is equal to 1 by F is equal to 1 upon NP. Of course, you need to place here one minus sign, because NP means here also, here only opposite side. So minus sign, and here minus again 1 minus 2 here. Remember, I am taking here this 25 in centimeter. So this also you need to treat as a centimeter. If you are treating this in meter, so you need to multiply it here also by 100. So this is your formula for hypermetropia. ठीक है ना? So how to find out the power for hypermetropic eye? This is how. P is equal to 1 upon F is equal to 1 upon minus of near point minus 100 divided by minus of 25. So this minus minus will become plus. So what you will get is equal to 1 upon minus NP plus 100 by 25. And then you will have some step, you will solve the step, you will have your answer. Clear? So let us see one numerical on this hypermetropia. Okay.
सी द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपर मेट्रोपाइक आई 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये एक सवाल है जो हमने लिया है ना। क्वेश्चन ये है कि द एनपी नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपाइक आई 16 सेंटीमीटर। दैट मीन्स नियर पॉइंट जो है ना हाइपरमेट्रोपाइक आई में नियर पॉइंट जो है 60 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड, ठीक है, विच इनेबल हिम टू सी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 की जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं दिख रही है, लेकिन उसको दिख रही है 60। इसका मतलब उसकी जो 25 का जो एनपी था वो शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया, 60 में। दिख कौन सा रहा है, 60। देखना किसको है, 25 को। सो फॉर दैट हाउ यू अप्रोच, लेट अस सी। तो हियर आई एम राइटिंग सॉल्यूशन। सी यू विल राइट गिवन दैट, ठीक है, एनपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। क्लियर, एनपी इज गिवन टू यू, देन P is equal to 1 upon F is equal to 1 by NP और minus 1 by minus 25 centimeter. You see this is in centimeter, so I am treating here also centimeter because it is given centimeter here only, okay. But if power and focal both is given, so I should go with meter only, okay. For तो here I will write 1 by F is equal to 1 by, अच्छा यहाँ पे भी माइनस साइन, तो इफ ऑलरेडी हियर वी हैव टेकन इन माइनस, सो आई विल राइट हियर माइनस 60 सेंटीमीटर और इधर हो जाएगा माइनस 1 बाय माइनस 25, ठीक है। तो 60 एंड 25, सी फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी हियर इन, अच्छा दिस वन आई एम टेकिंग इन प्लस, ठीक है। सो व्हाट माइनस माइनस विल बी प्लस, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इधर प्लस, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। सो हियर नाउ 1 बाय एफ इज इक्वल टू 60 and 25. What is the LCM? 60 and 25, 300, right? तो 360 what times 300, 5 टाइम, तो माइनस 5 इधर प्लस 25 what टाइम 12, so 12 minus 5 that becomes 7 is equal to 7 upon 300. So you see focal length is, now the focal length you got 300 by 7, this is in centimeter, remember 300 by 7 it is in centimeter focal length you got. But if they will ask you to find out the power also, so for that power how you will find out, power के लिए directly P is equal to 1 by F is equal to 1 by F, how much you have got, 7 by 300, 7 by 300. Remember this is in centimeter up to here, so I will multiply here by 100 in order to get it in meter. So this 0 0 0 0 cancel out, so 7 upon 3, what is we are having left with 3 to the 6, 2.10, तो 2.33. So this is in diopter. So this focal length I will get in, and remember this whole thing focal length and power we are getting in plus. That means we are going to use here convex lens, and it is the case of hypermetropia. So that means our answer is correct only. Clear? So this is how you can approach. See, this is the main formula, है ना? This is the main formula. This you always remember. This is the main formula. Okay. हेलो। तो बच्चों मेनली जो है ना, मेनली मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इन द एग्जामिनेशन दे आर आस्किंग, बट सम टाइम वी हैव सीन प्रेस बायोपिया also they have asked. This is also one of the defect of vision is there, okay. So let us understand what is presbyopia. Presbyopia, it is also one of the defect of vision, a kind of defect, it is also a kind of defect of vision which occurs due to एजिंग। लगभग बुढ़ापे में ये होता है, ठीक है ना। तो लगभग ये बुढ़ापे वाला केस है, बुढ़ापे में लगभग होता है। और इसकी रीजन क्या है बच्चों, तो इसका जो मेन कॉज है ना, इसका जो मेन कॉज है वो है ड्यू टू वीकेनिंग ऑफ सिलरी मसल। मतलब सिलरी मसल जो है इसका मेन काम है भाई फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने। अब ये बहुत कर लिया, अब
ये भाई जवाब दे दिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो तो यू कैन ऑल्सो राइट एंड ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सिलरी मसल्स। ठीक है, तो बच्चों ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो रीज़न मेन कॉज है दिस प्रेस बायोपिया का। और इसमें व्हाट एक्चुअली हैपन इन प्रेस बायोपिया, इन प्रेस बायोपिया अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ। ठीक है ना, द पर्सन suffers from both myopia as well as hypermetropia। भाई दोनों बीमारी है, आपको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे भाई, व्हाट इज माय अप्रोच फॉर करेक्शन? तो भाई दोनों को ठीक करने के लिए जो भी रेस्पेक्टिव लेंस है हम उसकी यूज करेंगे। तो ये आप चश्मा आप देख लो, ठीक है ना, ये मान लो आपकी ये चश्मा है, ठीक है ना, ठीक है। तो ऊपर जो है ना, ऊपर ये आप देख रहे होंगे ऐसा टाइप का कोई चश्मा, ऊपर जो है ना ये हाफ पोर्शन जो है, हियर इट इज कॉन्वेक्स, हियर इट इज कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ना कॉन्वेक्स लेंस रहता है, और इन दोनों ऊपर जो सरफेस है ना, हियर इट इज कॉनकेव लेंस। सो फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट upper part is fitted with concave lens so that we can see distant object, and for nearby object है ना we will use convex lens। ठीक है ना, so we are using bifocal lens। so bifocal means दो फोकस, एक for concave दूसरा for convex, that's why we are using bifocal lens for the correction of press myopia। So in press myopia what happened, a person suffering from both myopia as well as hypermetropia, and this is basically happening due to aging। उम्र बढ़ने से बुढ़ापे में लगभग हमारी जो सिलरी मसल्स है आंखों की, जिनका मेन फंक्शन है आंख में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखना, सो दैट इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंगली एज पर द ऑब्जेक्ट जो है, वेरेवर द ऑब्जेक्ट इज देयर इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस। सो इट हैपन व्हाट, इट gradually decrease the strength of this ciliary muscle। ठीक है ना, तो generally you can write weakening of ciliary muscle, or else you can write decrease in flexibility of ciliary muscle, or you can write both। ठीक है ना, तो this is the cause for press myopia, and this is what about, and this is the correction, that's all for press myopia। clear बच्चों? और एक डिफेक्ट ऑफ विजन है, that is called astigmatism। so what is this astigmatism? आइए देखते हैं astigmatism। अब देखो, पर्सन एस्टिग्मेटिज्म मीन्स पर्सन इज अनेबल टू फोकस द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल, द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल लाइन एट द सेम टाइम। ठीक है ना, अनेबल टू फोकस ऑन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एट द सेम टाइम। अब लाइक ये एक फिगर हम दे रहे हैं आपको, ये सो दिस इज द वर्टिकल लाइन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, बट दोज हू आर सफरिंग फ्रॉम एस्टिग्मेटिज्म, सो फॉर देम दिस हॉरिजॉन्टल लाइन विल लुक लाइक दिस, दिस इज हाउ। ठीक है, एंड दिस वर्टिकल लाइन विल लुक लाइक दिस। So they are unable to focus clearly। so what is the reason, cause इसकी क्या है भाई? so the main cause is unusual shape, or else you can say irregular shape of cornea। तो कॉर्निया की जो शेप है ना वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाती है,
जिसके वजह से ये एस्टिग्मेटिज्म नाम का वी आर अनेबल टू फोकस द वर्टिकल एंड द हॉरिजेंटल लाइन एट द सेम टाइम। सो फॉर दैट हमारे पास क्या उपाय है भाई? तो हम यहाँ जो करेक्शन के लिए यूज करते हैं सिलिंड्रिकल लेंस, है ना। सिलिंड्रिकल लेंस लाइक, अब हाउ टू ड्रॉ, दिस इज हाउ आप यूज कर सकते हो चश्मा, ठीक है। अब सिलिंड्रिकल लेंस जो है लाइक दिस, तो वी आर यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म। अब नेक्स्ट है बच्चों ये कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट नाम सुने होंगे, मोतियाबिंद। वो कोई जनरली कैटरेक्ट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम, बट देन ऑल्सो यू अंडरस्टैंड कैटरेक्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन दैट हैपन्स ड्यू टू वन लेयर, है ना, एक प्रोटीन का एक लेयर जम जाता है दो बच्चों ये आँख के ऊपर, यहाँ पे कॉर्निया के ऊपर। तो धीरे धीरे इसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो जाती है। भाई जब ओपेसिटी इसकी कम हो गई तो फिर क्या होगा, ये जो विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जो है सर्जरी ऑफर करते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, इस चीन को एक मशीन में रखा जाता है, इसमें एक लेज़र लाइट से बम्बार्ड कराया जाएगा, पूरा ये लाइट आपका मतलब वॉश किया जाएगा ये आपका आँख, एंड देन you will be free, ठीक है। and in this process it will take some time, almost 15 to 30, in most of the cases one month, ठीक है। they are giving you one काला चश्मा, ठीक है। so that you might have seen in your village and all, okay, person old age, in old age जो है they are using one spectacle, black काला चश्मा, ठीक है, काला चश्मा। here also it will be covered, here also means none of the light should enter. I mean it is very, after getting operation na, this eye operation, this eye become very sensitive. They don't want even a high intensity of light. They don't want any light. So that's why full eye should be covered by black eye, black chashma, means kala chashma. For some days after day by day the things get normal, and then you will start seeing without chashma also.